So today we will learn how to write quote how to write uh, for asking a quotation letter to reputed suppliers. So if you need some things, you can write a letter to the dealer for their quotations. So now what is quotations do have? Whenever an organization needs to purchase material from a market on a large scale, it is general practice to call for quotations from the established suppliers, either by sending a letter or by publishing a notice in a newspaper. So whenever an big organizations needs to buy a product in a large number, it's generally the organizations write for the quotations or or uh, or write a notice in the newspaper for quotation. So in the two way, so directly write their directly write a letter to the supplier for a quotations, or published a notice in the newspaper for quotations. So in this way, an organizations that needs to buy a material on a large number can write a letter to a supplier or publish a notice in the newspaper for quotations. The purpose of seeking quotations is to compare the terms and conditions of suppliers offered by different sellers. So what is the purpose of asking quotations? The purpose of asking quotation is to compare the terms and conditions of the different suppliers. For getting all details of the suppliers, letter for quotations should contain. So your letter for asking quotations should contain detail of material records. The detail of material that you want to buy should be written in details in your letter. Quality and quantity of the material required. So what is the quantity, what are the qualities, what are the quantities you need should be written in clear in the letter. Time limit for the supplier. So what is the time limit for the supplier you want to give, it also be included in the letters. Place of the delivery. So the place of the delivery, the place where suppliers deliver your material should also be written in the letter. Discount and concessions that you need also be written over there. So all these things should be kept in mind while writing a letter for quotations. So here look, क्या है लेटर ऑफ कोटेशंस. कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, व्हेनेवर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू परचेज, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कुछ खरीदना चाहता है, बहुत बड़ा, बहुत सारे, कुछ चीज़ एक चीज़ नहीं, कुछ चीज़ बहुत क्वांटिटी में बहुत सारा चाहता है खरीदना, तो क्या करते वो जनरली वो कोटेशन लेटर भेजते हैं सप्लायर को, या फिर पेपर में न्यूज़पेपर में नोटिस दे देते हैं कि कोटेशन उसे भेजिए उसका. सो पर्पस क्या है? पर्पस है जो सप्लायर उस चीज़ को दे सकता है कंपनी को, वो लोग कोटेशन भेजता है. सो कंपनी क्या करती है, उस कोटेशन को सबका जितना सप्लायर को कोटेशन भेजिए, सबका कोटेशन को क्या कंपेयर करते हैं, किसका कोटेशन अच्छा है, कौन सा, सब कुछ, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं. सो तो जब कोटेशन के लिए लेटर भेजा जाए, कोटेशन चाहने के लिए, तो क्या क्या होगा. सो डिटेल्स ऑफ द मटेरियल, क्या क्या मटेरियल जरूरी है वो आपको सप्लायर को जनाना होगा. क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना क्वालिटी क्या चाहिए, सब कुछ देना होगा, लिखना होगा चिट्ठी में. टाइम लिमिट सप्लायर को कितना देना चाहते हैं वो भी लिखना होगा. प्लस डिलीवरी देना होगा, डिस्काउंट कॉन्सेशन क्या तुम चाहते हो वो भी देना होगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर should be written in the letter for asking quotations. Now look at an example and it will be clear to you. Example for a letter calling for quotation from a manufacturing company. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक कोटेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं. कोटेशन के लिए किस चीज़ का, बाईसाइकिल के पार्ट्स का. फॉर एग्जांपल भेजा तो कौन भेज रहा है, लेटर हेड में लिखा होगा कौन भेज रहा है. सो ये पूना बाईसाइकिल स्पेयर पार्ट्स सप्लायर्स.
पुणे बाईसाइकिल स्पेयर पार्ट सप्लायर भेज रहा है, कहाँ पे, एड्रेस क्या है, 36 शनिवार और पुणे। तो ये है लेटर हेड जो ये कोटेशन चाहता है, जो सप्लायर को भेज रहा है कोटेशन। डेट, अब किसको कोटेशन भेज रहा है, देखो कोटेशन भेज रहा है टू द मैनेजर हीरो बाईसाइकिल LTD फोर्ट मुंबई 400001। सो यहाँ पे मैनेजर को, बाईसाइकिल के मैनेजर को कोटेशन भेज रहा है, मतलब कोटेशन चाह रहा है, भेज नहीं, कोटेशन नहीं भेज रहा है, कोटेशन चाह रहा है, उससे लेटर भेज रहा है कि कोटेशन देने के लिए। सो नाउ व्हाट डू यू वांट कोटेशंस that are written in the letter. So the subjects seeking quotations for supply of bicycle spare parts. So bicycle का parts के लिए quotation चाह रहे हैं। Respected sir, salutations. So look here, we have been a leading wholesale suppliers of bicycle spare parts to Pune market, providing the needs of retailers of the city for the last 20 years. So we are the leading wholesaler in the city to supply parts of the bicycles to the retailer for the last 20 years. So we have well equipped showroom with a large storage capacity in the city. So we have a well equipped, well decorated showroom as well as the large storage capacity we have in the city. So we used to place an order for supply of following items. So we used to place an order, we used to place an order, or you may say we used to buy the following items. Kindly send your quotations. So we ask you or request you to send your quotations according to the items that we want to buy. So this is the letter heading. Now as a support of following items मतलब यहाँ पे जो दिया है, so these are the following items that we want. So the frames, descriptions में क्या है, frames 50 copies, 100 black color, out of 50s we need 100 black colors. Chain covers 1000 pieces, 50 black colors, out of handles 1000 pieces, steel plated tires 1000 pieces, thick enough. So all these things we need, the material descriptions, quantity and specifications, all these things we need. So according to the quantity and quality that we need, you can send me the quotations. Now the term and conditions of our quotations, term and conditions of our materials that we need. The above mentioned items should be packed to avoid damage. So all these items should be packed when you send us to avoid damage. The payment will be made only on receipt. So the payment of all these things you will get after the delivery of the materials. In case of materials are not received within 15 days, we are free to cancel the order. So in case of 15 days, if you let more than 15 days to delivery, we can cancel the order, or we are free to cancel the order. The responsibility of the damage during transit, is yours. So the damage of the materials during the transit, it will be your, the responsibility will be your. So we expect kind cooperations from you and wish to establish a good business relationship with you. So we expect kind cooperations from you, or we expect a kind cooperations from you, or we expect that you will send us a quotation as soon as you receive our letter and wish to establish, and we wish to establish a business relationship with you. So you faithfully XYZ पुणे बाइसाइकिल पार्ट्स सप्लायर्स। तो ये है एक क्वेश्चन चाहने का लेटर। सो इसे सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, रेस्पेक्टेड सर वी हैव बीन लीडिंग होलसेल सप्लायर, यहाँ पे है हम लोग लीडिंग होलसेल सप्लायर फॉर बाईसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का पुणे मार्केट में, जिसे हर रिटेलर को हम लोग सप्लाई करते हैं उसके ज़रूरत का लास्ट 20 ईयर्स से। वी हैव इक्विप्ड शोरूम, वेल डेकोरेटेड इक्विप्ड शोरूम हम लोग अच्छा है, सजाया हुआ शोरूम भी है एंड बहुत स्पेस भी है इन द सिटी में। वी यूज टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई, हम लोग ऑर्डर देना चाहते हैं कुछ चीज़ का जो नीचे दिया हुआ है। काइंडली सेंड कोटेशन, हम लोग आपका कोटेशन भेजिए।
सो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन क्या क्या चाहिए हमको, क्वांटिटी कितना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन मतलब उसका क्या क्वालिटी होगा, क्या सब कुछ डिटेल्स में। टर्म एंड कंडीशंस क्या है हम लोगों का, वी हैव मेंशन आइटम शुड बी पैक्ड। जो आइटम आप हमको भेजेंगे वो पैक्ड होना चाहिए डैमेज को अवॉइड करने के लिए। पेमेंट डिलीवरी के बाद दिया जाएगा। कैश में कैश ऑफ मटेरियल्स, द कैश ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ मटेरियल्स आर रिसीव्ड 15 days, within 15 days. If in case of material are not received, in case of material you may say, in case of material जो है आप भेज रहे हैं, अगर 15 दिन से लेट हो गया तो हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, फ्री है, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट इज योर, मतलब हम लोग को भेजने का टाइम कुछ अगर डैमेज हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। सो हम लोग चाहते हैं, वी एक्सपेक्ट काइंड कोऑपरेशन फ्रॉम यू, आपको साथ कोऑपरेशन चाहते हैं आपका, एंड आपके साथ एक गुड बिजनेस रिलेशनशिप्स बढ़ाना चाहते हैं। सो एंड लास्ट इट फेथफुली जो भेज रहा है। सो दिस इज द लेटर फॉर आस्किंग quotations from a supplier. So you can write in this way for asking a quotations. Thank you.